हेलो हाय एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल। तो आमे प्रीवियस क्लास रे कोन करथिले ना आमे फार्माकोलॉजी रो जो कंटीन्यूअसली मैराथन क्लास तीनटा नैचे कि चारटा नैचे तो ताको कंप्लीट देखंदो। देन आज कोन करबा ना आमे पेडियाट्रिक रो मैराथन क्लास को स्टार्ट करबा। ओके तो विदाउट फर्दर डिले क्लास रे समस्त जोड़े हे जानतो। आउ आज रे आमे क्वेश्चन को चलंदो क्वेश्चन सेशन को विदाउट फर्दर डिले चलंदो आज सेशन को स्टार्ट करबा। ओके तो क्लास रे समस्त एड हे जानतो। ओके तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देखो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके जो आमर चिल्ड्रेन रो कौन हुए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए। तो डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग कौन हुए है। तो डेवलपमेंट जिते हुए ओके ऑप्शन ए इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ना इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस और ऑप्शन सी क्वालिटेटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स कैपेसिटी टू फंक्शन ना ऑप्शन डी क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। तो देखो आमर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए ता प्रिंसिपल्स रे कौन जाउची है। तो आमर जो प्रिंसिपल्स रोची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो प्रिंसिपल्स कौन ना आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केमित हुए ना सेफालोकाउडल हुए प्रोक्सिमोडिस्टल हुए जनरल टू स्पेसिफिक हुए है। तो एठी हमर कोन कहूची ना ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन। ओके तो ग्रोथ कौन हुए ना ग्रोथ होची गोटे होची कौन ना हमर ग्रोथ रे कौन हुए ना बॉडी रो पार्ट्स कौन हुए ना इंक्रीज हुए इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस कौन हुए ना इंक्रीज हुए दुराई गोटे होची कौन ना क्वांटिटेटिव मेजर्स है क्वांटिटेटिव मेजर्स है। ग्रोथ टाको आमे एज ए क्वांटिटी मेजर्स आमे मेजर करू और डेवलपमेंट टा कोन ना क्वालिटेटिव मेजर्स हिसाब रे आमे कंसीडर करू। तो ग्रोथ रे कोन हुए ना बॉडी रो साइज इंक्रीज हुए देन कोन हुए ना इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस इंक्रीज हुए आउ कोन हुए ना बॉडी रो कोन हुए ना ग्रोथ हुए। बट क्वालिटेटिव रे कोन हुए ना ऑल माने ऑल एक्सेप्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी रो कोन हुए ना ग्रोथ हुए। तो देखो क्वालिटेटिव रे कोन हुए जेहेतु हमर डेवलपमेंट होची गोटे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स तो कोन हुए ना ऑल बॉडी एस्पेक्ट्स रो कोन हुए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए। लाइक कोन कि हमरो क्वालिटेटिव रे कोन जीवो ना इमोशनल देन कोन ना हमरो कॉग्निटिव मेंटल स्टेटस कि ए सब रो कोन हुए ना डेवलपमेंट हुए। ओके तो एठी हमर क्वेश्चन कोन कहूची ना डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एटा होची कोन ना हमरो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट रे जीवो हला एटा कोन ग्रोथ रे जीवो हला इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस एटा भी हमर कोथरे जीवो ना हमरो ग्रोथ रे जीवो। ओके बट क्वालिटेटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन एटा होची कोन ना हमरो डेवलपमेंट को रेफर्स करे। तो ऑप्शन सी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर। ओके तो क्वालिटेटिव रे कोन हुए ना क्वालिटेटिव रे हमें कोन इंप्रूवमेंट हुए ना हमरो एबिलिटी स्किल्स चाइल्ड रो एबिलिटी स्किल्स आ कोन डेवलपमेंट हुए ना बिहेवियर चला जोरा कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कोन करे ना डिफाइन करे। तो ऑप्शन सी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर। आ क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी नॉट क्वालिटेटिव चेंजेस हुए बट ओनली बॉडी रे हुए नहीं हला ऑल एस्पेक्ट रे हुए ऑल एस्पेक्ट ऑफ
बॉडी रो हुए सेतमे ऑप्शन सी होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर यस रेखा सेतु ऑप्शन सी होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर देन देखो एठी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ग्रोथ कोन रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज अदर बॉडीली चेंजेस हला जोरा कि ग्रोथ केमिति हुए एक्सटर्नल इन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल हुए आउ ग्रोथ रेफर्स टू पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रो कोन हुए ना ग्रोथ हुए आउ ग्रोथ गुटे होची कोन ना क्वांटिटेटिव इन नेचर रो आउ ग्रोथ लिमिट्स जोरा कि एज हेले कोन हुए ना ग्रोथ रो लिमिट हे जाय स्टॉप्स हे जाय एट सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी जतले मैच्योरिटी आसी जीवो सेतले कोन ना ଗୋଟେ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आसीले कोन हुए ना ग्रोथ कोन हुए ना स्टॉप हो जाए जोटा कि एक्सटर्नल ओके आउ डेवलपमेंट कोन ना डेवलपमेंट रेफर्स टू कोन ना द आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स हला केमिति हमर ऑर्गन्स फंक्शनिंग करूची मेंटल जो हमर ब्रेन केमिति फंक्शन करूची हला देन डेवलपमेंट इज एन इंटरनल इन नेचर हमर ग्रोथ होची कोन ना एक्सटर्नल थिला आउ डेवलपमेंट होची कोन ना हमर इंटरनल हला वी कैन ओनली फील इट करि परिबा हला मेंटल एबिलिटी स्किल्स ए सब कोन ना देखो मेंटल एबिलिटी को तमे तो तार माने कोन ना तमे ताको फील ही करि परिबो ना कि ताको आउटर एनवायरनमेंट देखि परिबो ताको केंति करि परिबो ना फील करि परिबो कोन ना मेंटल एबिलिटी देन स्किल्स ए सब कोन ना तमे फील करि परिबो ओके देन डेवलपमेंट implies on the body as whole को निये ना कि गोटे पर्टिकुलर पार्ट को एटा होल बॉडी को कोन करे ना implies करे देन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर एटा हमरो ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव एटा मन रखिबो डेवलपमेंट होची कोन ना गोटे क्वालिटेटिव इन नेचर देन डेवलपमेंट जोटा कि हमरो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चले हला ओम टू टोम जाय हमरो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होची कोडा ना डेवलपमेंट ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची डेवलपमेंट चेंज दैट occurs across all stage of life is known as कोन हला डेवलपमेंटल चेंजेस दैट occurs across all stages of life is known as कोन अर्ली स्टेज अप्रोच लाइफ साइकिल अप्रोच मैच्योरिटी अप्रोच ना लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच कमेंट करो कोन हबो देखो जो डेवलपमेंट हुए डेवलपमेंट जो हुए सेरा कोन हुए ना हमरो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हुए हला लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हुए नॉट अर्ली स्टेज अप्रोच नुहे अर्ली स्टेज माने ओनली तो अर्ली स्टेज माने होची कोन ना हमरो इन्फेंसी पीरियड आउ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हला ए दिटा को बुझी अर्ली स्टेज बट हमरो डेवलपमेंट कोन हुए ना इन्फेंसी पीरियड हुए देन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे भी हुए आउ कोन हुए ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रे भी माने कोन हुए ना हमरो टिल डेथ जाय कोन हुए ना डेवलपमेंट हुए तो एडा हमरो इनकरेक्ट एडा हमरो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को बुझौची आगु को बुझोनी देन ऑप्शन बी कोन कहूची ना लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस देखो लाइफ साइकिल अप्रोच माने होची लाइफ साइकिल माने गोटे लाइफ गोटे साइकिल होची कोन डेवलपमेंट सेटा हमर लाइफ साइकिल अप्रोच नुहे आको हमें कोन कहबा ना हमर मैच्योरिटी अप्रोच ओके तो ऑप्शन सी होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर कारण हमर कोन होय डेवलपमेंट कोन होय ना ताको हमें कोन कहबा जते बळे ऑल स्टेज ऑफ लाइफ रे हबो ताको हमें कोन कहबा ना मैच्योरिटी अप्रोच कहबा ओके तो ऑप्शन बी होची सॉरी सी होची हमर करेक्ट आंसर यस प्रज्ञा सुचित्रा देन देखो एटा होची कोन ना हमर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हला प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके तो हमर
प्रिंसिपल्स कोन ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होची उटे कंटीन्यूअस प्रोसेस देन सीक्वेंशियल हुए हला देन जनरल टू स्पेसिफिक हुए देन डिफरेंशियलिटी हुए देन डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम कोन ना सेफालोकाउडल कोडल डेवलपमेंट हुए देन कौन हुए ना प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हुए देन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग हला डेवलपमेंट डिपेंड केंदी कर कहा ऊपर डिपेंड करे ना मैच्योरेशन ऊपर डिपेंड करे आ लर्निंग केते माने लर्न करूचो से अनुसार कोन हुए ना डेवलपमेंट हुए ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूची ना चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 मंथ ऑफ एज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोन children generally double their birth weight by 5 month of age this is an example of कोन ऑप्शन ने ताको हम डेवलपमेंट कहबा ना ऑप्शन बी ताको हेरिडिटी कहबा ना ऑप्शन सी ताको स्टेट ऑफ हेल्थ कहबा ना फिजिकल ग्रोथ कहबा यस रेखा सितु सुचित्रा यस तो देखो चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट हमरो जति कोन हुए ना डबल केबे हुए ना हमरो 5 मंथ रे डबल हुए देन कोन हुए ना 1 ईयर बसी कोन है जाय ट्रिपल हे जाय बर्थ वेट ओके तो एठी कोन कहूची ना चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 मंथ ऑफ एज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तो हमर जले बर्थ वेट होची हमर कोन होची सेटा हमर कोन होची ना ग्रोथ होची हला तो ग्रोथ होची कोन ना गोटे होची हमर क्वांटिटेटिव अप्रोच तो एठी कोन ना डेवलपमेंट को काटी दबा देन हेरिडिटी माने हमर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कहा ऊपर ना हेरिडिटी ऊपर डिपेंड करे हला जो फैमिली जो हेरिडिटी कोन ना तार माने बापार हाइट अधिक थिबो तो छुआर भी हाइट अधिक हबो बापार आई कलर जदी ब्राउन थिबो तो एटा कोन ना छुआर आई कलर ब्राउन सेही अनुसार कोन हेरिडिटी भी डिपेंड करे कहा ऊपर ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऊपर बट एठी कोन कहिछि ना बर्थ वेट डबल होछि हला तो हेरिडिटी रे कोन ना बोथ कोन हुए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाए हेरिडिटी तो एटा भी हमर इनकरेक्ट देन स्टेट ऑफ हेल्थ माने होछि स्टेट ऑफ हेल्थ होछि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हला तो हमर कोन होछि ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोन ना गोटे फिजिकल ग्रोथ जोटा कि हमर ऑप्शन डी होछि कोन ना हमर करेक्ट आंसर यस प्रज्ञा रेखा सितु स्टेट ऑफ हेल्थ माने होछि मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ कंडीशन ओके तो एटा भी हमर इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी कोन कहउछ ना फिजिकल ग्रोथ ओके ऑप्शन डी होछि हमर करेक्ट आंसर यस निर्मला देन चलो एटा देखो नॉर्मल वेट कैन जोरा कि हमर बर्थ वेट जदी हमर 2.5 रु 4.5 केजी रहउची तो डबल के पे जाउची ना अराउंड 5 मंथ रे बर्थ वेट डबल हे जाउची आ ट्रिपल के पे जाउची ना 1 ईयर रे ट्रिपल हे जाउची आ 4 टाइम्स के पे होची ना 2 इयर्स रे 4 टाइम्स हे जाउची ओके देन सेमिति हाइट हमर डबल के पे हुए ना 1 ईयर रे डबल हे जाए ओके जोराई केते ना 100 सेंटीमीटर हला 50% 75 सेंटीमीटर केबे हुए ना हाफ ईयर रे हे जाए आउ ट्रिपल केबे हुए हाइट ट्रिपल केबे हुए ना 13 इयर्स रे हाइट टा ट्रिपल हे जाए ओके
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। What is the ratio between upper and lower segment of the body at birth as measured from the symphysis pubis? कौन हबो को हला 1.7:1 1 1.3:1 ना 1.1:1 ना 1.1:1.3। तो देखो जते बेले हमर कोन हुए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए तो कोन हुए ना सेफालो कोडल डेवलपमेंट हुए हला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए तो कोन हुए जते बेले बार्थ हुए बेबी तार अपर सेगमेंट कोन थाए अपर सेगमेंट टिके अधिका थाए देन लोअर सेगमेंट हला अपर सेगमेंट रो कोन थाए ना रेशियो टिके अधिका थाए देन लोअर सेगमेंट हला। तो देखो 1:1.0:1:1.3 हला ऑप्शन डी जो कहूची 1:1.3 एडा हमर केतले देखा जिवो ना जते बेले आमे एडल्ट हे जिवो केते बेले ना जते बेले आमे एडल्ट हे जिबा सेते बेले हमर बॉडी रो रेशियो अपर बॉडी रेशियो आ लोअर बॉडी रेशियो केते हे जिवो ना 1:1.3 हे जिवो। ओके देन 1:1 केबे हबो ना हमर 7 to 10 इयर्स रे कोन हुए ना 1:1 हुए। ओके देन 1.3:1 केबे हबो ना जते बेले छुआ कोन हे जिवो ना हमर टोडलर हला जते बेले कोन ना टोडलर इयर टोडलर माने 3 इयर्स बसिगी केते ही जाए ना 1.3:1 हे जाए। तो एट बार्थ केते थाए ना 1.7:1 होजी हमरो अपर बॉडी और लोअर बॉडी रेशियो एट बार्थ। यस प्रज्ञा रश्मि रेखा सितु 1.7:1 निर्मला ओके ऑप्शन ए होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होची द डेवलपमेंट स्टार्ट्स विथ द हेड and gradually proceed to the tail portion. This principle of development is called तो हमें कौन कहबा ना the development starts with the head and gradually proceed to the tail portion. This principle of development is called कौन ऑप्शन ए cephalocaudal development ना proximodistal development ना general to specific ना according to age। according to the age हबनी हला कारण जदि according to age जिबा तो डिफर हे जिवो प्रिंसिपल को कोन करबनी फुलफिल करबनी। ओके देन जनरल टू स्पेसिफिक देखो जनरल टू स्पेसिफिक हमरो कोन हुए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए हेलो जनरल टू मन करो जण कर कोन ना आमे जदी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नबा तो डेवलपमेंट मन करो जण कर ना शोल्डर आ आर्म जदी जण कर कोन होछ ना डेवलप होउची तो फास्ट कोन ना से शोल्डर एंड आर्म को कोन करिवो ना ना फंक्शन हबो देन कोन हबो ना स्पेसिफिक आड़ को जीवो पर टंग आड़ को सॉरी ए जो फिंगर्स आड़ को जीवो फास्ट कोन ना शोल्डर तार ठीक से काम करिवो देन एटा होची जनरल देन स्पेसिफिक माने से कोन करिवो ना फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल तार डेवलपमेंट हबो ताको हमें कोन कहबा ना जनरल टू स्पेसिफिक हला। देन प्रोक्सिमो डिस्टल माने होची सेंटर टू पेरिफेरी ओके डेवलपमेंट केमते हबो ना सेंटर टू पेरिफेरी। तो एठी कोन कहिची जेतु हेड आउ ग्रेजुअल टेल पोर्शन रो कहिची तो हमर कोन हबो ना ऑप्शन ए cephalocaudal डेवलपमेंट कहि जिवो। ओके यस प्रज्ञा रेखा सितु
यस ऑप्शन ए होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूची यस लिलिप्ट विश्व यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ना व्हाई इट इज इंपोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आमे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आमे जो छुआर चेक करूचे हेल्थ केयर प्रोवाइडर रो इंपोर्टेंस कोन से जो हेल्थ जो हमर कोन करूचे ना मॉनिटर करूचे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोन पाई से करूची। ऑप्शन ए अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्ली केयर एंड ट्रीटमेंट। यस ना ऑप्शन बी पेरेंट्स नीड टू रीएश्योर ऑफ प्रोफेशनल्स टू नो देयर चिल्ड्रंस आर हेल्दी। ना statistical analysis is important for research। ना studying group of children helps to determine normal ranges। yes कौन हुए ना आमे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आमे जो मेजर्स करूछु कौन पाई मेजर करछु ना आमे अर्ली आइडेंटिफिकेशन करबा कोन ना न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स अर्ली आइडेंटिफाई कोन करबा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स किछि हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमें कोन करबा ना अर्ली आइडेंटिफाई करबा। जेमिति कि हमें कोन करूचे ना मेरास्मस एंड क्वासी वर्कर को कोन करबा ना किछि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को हमें कोन करबा ना अर्ली आइडेंटिफाई करबा। देन डिजीज कंडीशन को भी अर्ली आइडेंटिफाई करबा। तो ऑप्शन ए होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर। ओके यस रेखा यस तो कोन ना अर्ली डिटेक्शन एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्ली केयर एंड ट्रीटमेंट हला। जेतोले हमें अर्ली आइडेंटिफाई कर दबो सेतोले अर्ली केयर दे की ट्रीटमेंट करी की ताको हमें ठीक कर दबा। बट ऑप्शन बी कोन कहू ना पेरेंट्स नीड्स टू रीएश्योर ऑफ प्रोफेशनल्स टू नो देयर चिल्ड्रंस आर हेल्दी। तो एटा हमर इनकरेक्ट। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखो रिसर्च रे हमें कोन करू ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पई माने कोन करा जाय ना डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करा जाय बट नॉट द प्राइमरी रीजन। एटा प्राइमरी रीजन नहे हला। देन स्टडीइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस। तो एटा भी हमरो इनकरेक्ट ऑप्शंस। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना नॉलेज ऑफ normal growth and development of the child is essential for the nurse because kon knowledge of normal growth and development of the child is essential for the nurse because option a kon कहूची ना it is basic to understand the sick children। ना most nurses have children। ना most children do not get sick। ना it helps nurses to good father or mother। तो हमें प्रीवियस स्लाइड रे ऑलरेडी देखिले कोन ना हमें कोन पाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसेंशियल हम कोन पाई चेक करूचे कारण ऑप्शन बी कोन कहूचे ना मोस्ट नर्सेस हैव चिल्ड्रन। तो एडा हमर किछि यथार्थ देखौनी। देन मोस्ट चिल्ड्रंस डू नॉट गेट सिक एडा होचे इनकरेक्ट कारण हमर केबे ना केबे कोन हो ना चिल्ड्रंस गेट सिकनेस हेबे सिक हेबे। तो एडा भी हमर इनकरेक्ट। देन इट हेल्प्स नर्सेस टू बी गुड फादर एडा भी हमर इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एसेंशियल फॉर नर्सेस कोन पाई ना से इजीली कोन कर परिबो ना अंडरस्टैंड कर परिबो काहा को ना सिक चिल्ड्रन को हला को पेशेंट सिक आ को चाइल्ड इल हला कौन चेक कर परिबो ना नर्सिंग ऑफिसर कौन कर परिबो ना आइडेंटिफाई कर परिबो आइडेंटिफाई व्हिच चाइल्ड हैज सिक एंड वेल हला कहा देह ठीक अछि और कहा देह खराब अछि जदि से नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
जानिछि हम नर्सिंग ऑफिसर से इजीली आइडेंटिफाई करि पाइबो ओके तो ऑप्शन ए होछि कोन नाम करेक्ट आंसर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा यस रोजालिन ऑप्शन डी हबनी ऑप्शन होछि ए होछि करेक्ट आंसर प्रज्ञा यस ऑप्शन ए then next question when considering the principles of growth and development remember that कौन remember करिवो ना development occurs evenly with period of growth occurring every third year now although development occurs in an orderly sequence the rate may vary between individuals now all children should grow in the same rate all four olds should weight with 4 kg of each other now most children can run before they walk तो देखो ऑप्शन डी कौन कहूँ ना मोस्ट चिल्ड्रेन कैन रन फास्ट रन करिवो देन वॉक करिवो सेटा तो इम्पॉसिबल फास्ट कौन करे ना हमर नेक होल्डिंग हुए नेक होल्डिंग हबो देन कौन हबो क्राउलिंग देन क्रिपिंग हैला देन वॉक करिवो देन कौन करिवो ना रन करिवो ओके तो एटा हमरो मोस्ट चिल्ड्रेन कैन रन रन फास्ट करिवोनी फास्ट कौन करिवो ना फास्ट वॉक देन रन देन एटा हमरो इनकरेक्ट हेगला देन ऑल चिल्ड्रेन शुड ग्रो इन द सेम रेट रे ग्रोथ हुए नाही हैला डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके तो ऑप्शन सी हमरो इनकरेक्ट देन डेवलपमेंट occurs evenly with period of no growth occurring every third year हैला हमरो डेवलपमेंट इवेनली हुए नाही हैला इवेनली हुए नाही हमरो डेवलपमेंट आउ से कोन कहूची ना पीरियड ऑफ नो ग्रोथ ऑकरिंग्स एवरी थर्ड ईयर सेमिति किछि नाही जे थर्ड ईयर रे तार ग्रोथ हबो नाही हमरो कोन हुए मैक्सिमम ग्रोथ हमरो केबे हुए ना इन्फेंसी पीरियड रे कोन हुए ना हमरो मैक्सिमम ग्रोथ हुए तो ऑप्शन ए भी हमरो कोन हला ना इनकरेक्ट ऑप्शंस तो एठी कोन हबो ना ऑल्दो डेवलपमेंट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस हला ऑर्डरली सीक्वेंस हुए बट द रेट में भेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स हला हमर इंडिविजुअल्स रे कोन हबो ना भेरी करिवो यस दिगंतराज प्रज्ञा ऑप्शन बी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना बाय असेसिंग वन कैन असाइन डेवलपमेंट quotient for any development sphere it is calculated as कोन हुए जो हमें डेवलपमेंटल क्वांटिएंट हम जो चेक करू केमिति चेक करू मन कर कोन ना डेवलपमेंट क्वांटिएंट को हमें चेक करिया चाहूचे तो मन कर गोटे छुआर केते एज केते ना तार एज होची केते ना हमरो 12 इयर्स ओके देन कोन ना तार होची कोन ना तार क्रोनोलॉजिकल एज केते क्रोनोलॉजिकल एज होची केते ना कोन देखो तार क्रोनोलॉजिकल एज केते ना 12 इयर्स हला क्रोनोलॉजिकल एज होची तार केते ना 12 इयर्स देन तार मन कर होची डेवलपमेंटल एज ओके डेवलपमेंटल एज जदि हमें केते नबा ना 9 इयर्स नबा ओके जतो 9 इयर्स तार डेवलपमेंटल एज नबा तो हमें जेते तार कोन बाहर करबा डेवलपमेंटल क्वांटिएंट बाहर करबा तो हम तो केमिति बाहर करबा डेवलपमेंटल क्वांटिएंट इज इक्वल टू कोन ना हमरो डीए डिवाइड बाय सीए इनटू 100 ओके
तो डीए केते ना डेवलपमेंटल एज केते ना 9 डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज केते ना 12 इनटू 100 तो आको इतला हम डिवाइड कर दबा तो 75% आसीबो बुझ पारला तो एटा कोन कहूची ना बाय assigning one can assign developmental quotient for any developmental sphere it is calculated by केमिति ना average age at attainment by obtain age at attainment into 100 ऑप्शन बी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर यस दिगंतराज प्रज्ञा ऑप्शन बी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर तो देखो क्रोनोलॉजिकल एज माने होची कोन तार एक्चुअल एज हला क्रोनोलॉजिकल एज आ कोन तार एक्चुअल एज बट डेवलपमेंटल एज माने तार कोन ना से माने 9 वर्षर छुआ भलिया तार डेवलपमेंट होची बट तार एक्चुअल एज केते ना 12 इयर्स एज तो एडा हमरो तार ताको डिवाइड करले 75% तक हमें डेवलपमेंटल कंटेंट हमें नबा ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना ऑल द फॉलोइंग्स आर डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक्स एक्सेप्ट all the followings are developmental assessment techniques except BASII, DDST ना TNSC ना MSE कोडा टू एक्सेप्ट हबो तो DASII माने होची डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियंस हला डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियंस हला जो थरे हमें कोन चेक करू ना मोटर सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमें चेक करू कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमें चेक करू कोथरे ना DASII देन डीडीएसटी माने कोन ना हमरो डीडीएसटी होची डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट हला डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट जो थरे हमें कोन करूछु ना पर्सनल एंड कोन करूछु ना सोशल डेवलपमेंट चेक करू आ कोन ना फाइन मोटर डेवलपमेंट हला फाइन मोटर डेवलपमेंट को हमें डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट रे हमें चेक करू ओके देन टीडीएससी कोन ना टीडीएससी होची कोन ना त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट जो थरे हमें कौन चेक करू ना डेवलपमेंटल डिले को हमें चेक करू जो थरे डी नथिबो सेटा ठीक कर दियसु कोडा प्रज्ञा एथरे कौन करू ना डेवलपमेंटल डिले को हमें चेक करिबा डेवलपमेंटल डिले को हमें कौन करू ना चेक करू कोथरे ना टीडीएससी तो देखो एठी कौन कहिछि ना ऑप्शन डी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमें नॉट ए पार्ट ऑफ कोना डेवलपमेंटल असेसमेंट टेक्निक एटा कौन करना साइकियाट्रिक रे यूज करा जाय साइकियाट्रिक रे हमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करू यस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दिगंतराज ये सोनाली यस ऑप्शन बी हबनी ऑप्शन डी देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ए नियोनेटल पीरियड मींस कोन ए नियोनेटल पीरियड मींस कोन
तो देखो नियोनेटल पीरियड्स कोन ना हमर नियोनेटल पीरियड होची जेतेबेले कोन ना गोटे न्यूबॉर्न बेबी हमर जन्म हैला तो जेतेबेले नियोनेटल पीरियड नियोनेटल पीरियड होची हमर दी टाइप रो गोटे होची अर्ली नियोनेट आ गोटे होची कोन ना हमर लेट नियोनेट्स हैला अर्ली नियोनेट का कह जाए ना हमर 0 to 7 डेज को कौन कहा जाए ना अर्ली नियोनेट पीरियड कहा जाए आ लेट नियोनेट केते कहा जाए ना हमर 7 to 28 डेज को हमें कौन कहो ना लेट नियोनेट पीरियड कहो तो देखो ए बेबी एज ग्रुप ऑफ 0 to 28 days ना 0 to 3 month ना 0 to 7 days ना 0 to 1 year yes रेखा से तो प्रज्ञा yes कौन ना ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days तक हमें कौन कहो ना नियोनेटल पीरियड कहो आ जो ऑप्शन सी कौन कहू ना ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 days हेरा होची कौन ना हमरा अर्ली नियोनेट पीरियड अर्ली नियोनेटल पीरियड कहो आ जो 1 ईयर कहला सेटा होची कौन ना इन्फेंसी पीरियड ए 3 मंथ भी ए इन्फेंसी पीरियड रे आसुची ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची ना प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ कोन हला प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ कोन प्रीनेटल पीरियड तो देखो प्रीनेटल पीरियड माने होची छुआ कोन ना हमरो 37 वीक छुआ को केते हेतिबो ना 37 वीक हेतिबो माने बिफोर हेतिबो 37 वीक बिफोर को हमें कोन कहूचे ना हमें प्रीनेटल पीरियड कहूचे हैला तो ग्रोथ कंसिस्ट कोन करिवो देखो ओवम एम्ब्रियो ए दिरे कंसिस्ट करिवो बट प्रीमेच्योर इन्फेंट कोन ना से ऑलरेडी डिलीवर हे जेटा कि हमर कोन ना पोस्ट नेटल पीरियड कह जिवो पोस्ट नेटल बेबी कह जिवो हैला देन कोन कहूची ना ओवम फिटस एंड बार्थ जेतले बेबी बार्थ हे जाउची सेटा होची कोन ना पोस्ट नेटल पीरियड पोस्ट नेटल पीरियड देन ओवम एंड एम्ब्रियो दीटांक भी हमर कोन ना प्रीनेटल नुहे तो एठी कोन हबो ना ओवम एम्ब्रियो एंड फिटस तक हमें कोन कहूचे ना प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ हमें कहूचे हैला प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ का कहूचे यस सोनाली प्रज्ञा संगीता रेखा सेतु यस कोन ना हमर ओवम एम्ब्रियो एंड फिटस को हमें कोन कहूचे ना प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट करे ओवम एम्ब्रियो एंड फिटस ऑप्शन बी होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहूची द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन व्हिच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड कोन यस रैपिड फेज the stage of the embryo in which all body parts can be identified is called ताको हमें कौन कहबो देखो ऑप्शन में गैमेट माने होची कोन ना हमरो जर्म सेल जोला जी मेल गैमेट्स आउ फीमेल गैमेट्स हला मेल गैमेट्स स्पर्म फीमेल गैमेट्स ओवम आको हमें गैमेट्स को बट एथरे कोन ना ऑल बॉडी पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करिबार नाही कारण एतना एटा फर्टिलाइज हे देन जाइगोट कोन ना जते बेले फर्टिलाइजेशन हे जाउची सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हमें कोन कहूचे सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हमें कोन कहूचे ना जाइगोट कहूचे हैला तो एटा भी हमरो
इनकरेक्ट जाइगोट पीरियड को हम केते नो ना 0 to 2 वीक्स होची कोन ना हमरो जाइगोट देन कोन हबो ना एम्ब्रियो एम्ब्रियो केते ना एम्ब्रियो होची हमरो 2 वीक्स to 8 वीक्स होची कोन ना हमरो एम्ब्रियोनिक पीरियड देन फिटस केते ना फिटस होची हमरो 9 वीक्स to till delivery fetal period एग होची कोन ना हमें ताको एग को कोन कहू ना हमरो एम्ब्रियोनिक पीरियड को हमें कोन कहू एग कहा जाए तो एठी कोन हबो ना ऑप्शन सी होची कोन हमरो करेक्ट आंसर कारण फिटस रे कोन हुए ना हमर 9 वीक्स टिल डिलीवरी जाए हमें फिटस को तो जोथरे कोन ना हमें एम्ब्रियो रो कोन हुए ना हमें ऑल बॉडी पार्ट्स को हमें कोन करि परिबा ना आइडेंटिफाई करि परिबा एटा तार नोज एटा तार हेयर एटा तार कोन के ईयर ए सब हमें आइडेंटिफाई करि परिबा यस फिटस और फेटस हला यस प्रज्ञा देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूचे ना द पीरियड ऑफ ओवम इज कोन द पीरियड ऑफ ओवम इज फ्रॉम conception to 2 weeks ना from 3 weeks to 2 month ना from third month to birth ना ovum of omen the period of ovum तो देखो यस कौन ना ओवम कबे कौन कहू ना हमें जो कहूतले कौन ना फर्टिलाइजेशन को कौन कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाए देखो हमें कौन कहू ना एम्ब्रियोनिक पीरियड कहू एम्ब्रियो को जोरा कि हमर केते ना हमर फ्रॉम conception टू 2 वीक्स को हमें कौन कहू ना हमें एम्ब्रियोनिक पीरियड कहू तो ऑप्शन ए होची कौन ना हमर करेक्ट आंसर यस धुनो सुचिस्मिता दिगंतराज यस कौन ना फ्रॉम conception टू 2 वीक्स कौन होची ना पीरियड ऑफ ओवम हमें ताको कहू और फ्रॉम 3 वीक्स टू 2 मंथ फ्रॉम थर्ड मंथ टू बर्थ देखो 3 वीक्स टू 2 मंथ रे हमर केते आछी केते वीक्स आछी ना 1 मंथ रे हमर 4 वीक्स आउ 2 मंथ रे हमर केते वीक्स ना 8 वीक्स तो ताको हमें कोन कहिबा ताको हमें सॉरी एटा को जो एम्ब्रियो कहले एटा जाइगोट कहै छै भला फ्रॉम conception टू 2 वीक्स कोन ना हमर जाइगोट ओके आउ फ्रॉम 3 वीक्स टू 2 मंथ होची कोन ना हमर एम्ब्रियोनिक पीरियड देन फ्रॉम 3 मंथ टू बाथ होची कोन ना हमर फिटल पीरियड ओके तो ऑप्शन ए होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर यस जर्मिनल पीरियड देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज कोन embryonic stage is known as तो देखो 13 वीक्स टू 24 वीक्स होची कोन ना हमरो अर्ली इन्फेंसी पीरियड 36 वीक्स टू 40 वीक्स होची कोन ना लेट इन्फेंसी पीरियड एंड 25 टू 26 वीक्स होची कोन ना हमरो सेही होची कोन ना हमरो
अर्ली टू मीडियम इन्फेंसी पीरियड रे जाउची हला तो एटा कोन हबो ना 8 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन होची कोन ना हमर जो रहउची केते ना एम्ब्रियोनिक स्टेज केते रहउची ना 2 वीक्स टू 8 वीक्स जो रहउची तको हमें कोन कहउचे ना एम्ब्रियोनिक स्टेज कहउची यस ऑप्शन ए होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउची ना द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग until 8 weeks after implantation is known as now the developing offspring until 8 weeks after implantation is known as kono ऑप्शन ए नियोनेट्स ऑप्शन बी एम्ब्रियो ना ऑप्शन सी फिटस ना ऑप्शन डी कोरियन तो देखो कोरियन नु हमर कोन तयारी होय ना एटा होची एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन जो थ्रू हमर कोन तयारी हुए ना प्लासेंटा तयारी हुए हला तो एटा हमर इनकरेक्ट देन फिटस पीरियड हमें केते कहउचे ना फिटल स्टेज हमें केते कहउचे 9 weeks to 9 weeks to till delivery हमें कौन कहउचे ना फिटल पीरियड कहउचे देन नियोनेट कोन ना आफ्टर डिलीवरी अर्ली नियोनेट आउ लेट नियोनेट बट एटी कौन कहइछ ना डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग until 8 weeks तक हमें कौन कहबा ना एम्ब्रियोनिक स्टेज कहबा ऑप्शन बी होउची कोन ना हमर करेक्ट आंसर यस संगीता सुचित्रा दिगंतराज यस ऑप्शन बी होउची कोन ना हमर करेक्ट आंसर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कहउची ना 7 weeks after the conception the growing structure inside a uterus is now called तो हमें कोन कहबा 7 weeks after the conception 7 weeks after the conception the growing structure inside a uterus is now called तो हमें कोन कहबा ताको जायगोट कहबा ना एम्ब्रियो कहबा ना फिटस कहबा ना नियोनेट्स कहबा तो देखो फिटस केतले कहा जो तबले हमर 8 वीक्स रु पार हे जो 9 वीक्स रु कोन हबो 9 वीक्स टू टिल बर्थ हला 9 वीक्स टू टिल बर्थ हमें फिटस कहउचे एठी कोन कहछि 7 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन तो एबे जाय कोन हेनी ना 8 वीक्स कंप्लीट ही हेनी ओके जेतु 8 वीक्स हमर कंप्लीट हेनी तो हम ताको कोन कहिबा ना ऑप्शन बी एम्ब्रियोनिक पीरियड कहिबा हला 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन the growing structure inside the uterus is now called कोन ना हमर ऑप्शन बी एम्ब्रियो कारण एम्ब्रियोनिक स्टेज केते हमर रहउची ना हमर 0 टू सॉरी 2 टू 8 वीक्स कोन ना हमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रहउची ओके तो ऑप्शन बी होची कोन ना हमर करेक्ट आंसर ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउची ना द एम्ब्रियो चेंज्ड इनटू फिटस आफ्टर 2 weeks 6 weeks 4 weeks ना 8 weeks the embryo changed into fetus after केते वीक्स परे एम्ब्रियो टा हमर चेंज हे जाय फिटस ऑप्शन ए 2 weeks ऑप्शन बी 6 weeks ऑप्शन सी 4 weeks ना ऑप्शन डी 8 weeks यस तपस्विनी हमर 8 weeks परे कोन हे जाय
ना एम्ब्रियो चेंज इनटू फिटस संगीता यस रेखा सितु सुचित्रा यस ऑप्शन डी होची कोन नाम करेक्ट आंसर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम कोटू in the stage of growth and development the infancy extends from birth to 4 weeks birth to 1 years 4 weeks to 1 year ना 1 to 3 years देखो 1 to 3 years आमे जो नौचे आमे कोन कहूचे ना टोडलर पीरियड कहूचे हला टोडलर पीरियड कहूचे then birth to 4 weeks हला birth to 4 weeks तो 4 weeks रे केता आछी birth to 4 weeks होचे हमरो इनकरेक्ट ओके तो इन्फेंसी पीरियड केते ना हमरो birth to 1 year को आमे कोन कहूचे ना हमरो इन्फेंट पीरियड कहूचे ओके तो ऑप्शन बी होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर देन आज लास्ट क्वेश्चन कोन इन्फेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम ऑप्शन ए 0 to 1 years ऑप्शन बी 1 to 3 years ना ऑप्शन सी 3 to 6 years ना ऑप्शन डी 6 to 12 years तो देखो 6 to 12 years कोन ना हमरो स्कूल गोइंग चाइल्ड स्कूल गोइंग चाइल्ड इयर्स होची कते ना 6 to 12 years देन 3 to 6 years कोन ना हमरो प्री स्कूलर पीरियड होची कोन ना हमरो 3 to 6 years देन 1 to 3 years कोन ना हमरो टोडलर तो एठी कोन हबो ना ऑप्शन ए 0 to 1 years होची कोन ना हमरो इन्फेंसी पीरियड यस रेखा सितु ऑप्शन ए होची प्रज्ञा यस ऑप्शन ए होची कोन ना हमरो करेक्ट आंसर ओके तो आज रो पेडियाट्रिक रो क्लास को हमें एठी रखिबा देन नेक्स्ट क्लास रे हमें पेडियाट्रिक रो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें डिस्कस करिबा तो आज रो क्लास को जदि आपन मन को इफेक्टिव लागि छि तो लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करबा को जमारो भूलिबे देन नेक्स्ट क्लास भी हमें ए टाइम रे काली सेम टाइम रे हमें नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करिबा तो आज पे एति की थैंक यू सो मच